कंपनी के एमडी एंड सीईओ अंगन गुहा साहब हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं बात करने के लिए नतीजों के। नतीजे कल शाम को आते हुए दिखे थे, लार्जली इन लाइन या थोड़ा आप कह सकते हैं अनुमान से थोड़े कम थे। रेवेन्यू इन लाइन विद एस्टिमेट आया था, 3% बढ़कर आया था। डॉलर रेवेन्यू में 2.5% की आपने ग्रोथ देखी थी, अगेन इन लाइन विद एस्टिमेट्स था। एबिटा 18% गिरकर आया है, थोड़ा अनुमान से ज़्यादा यहाँ पर गिरावट आई थी और मार्जिन्स में भी थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन दिखा है। मुनाफा 15% गिर कर आया था। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ करीब 2.2% की रही है ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, थोड़ी अनुमान से बेहतर ही थी। आइए गुहा साहब से जानते हैं नंबर्स के बारे में और आगे का आउटलुक क्या है। सर, रेवेन्यू थोड़ा अनुमान के हिसाब से आया था, बट हमने बाकी पैरामीटर्स पर कॉन्ट्रैक्शन देखा है। एबिट मार्जिन थोड़े कम होकर आए थे। जरा बताएं सर, किस तरह की रही है आपके एनालिसिस में परफॉर्मेंस? So Dipanshu, first of all, thank you for having me on the show. Look, I think आप अगर हमारे first quarter को देखेंगे, first quarter में we did not really deliver great revenue growth. In fact, our revenue had shrunk in first quarter. So I'm pleased to say that in the second quarter we are back on growth. And I'm sure Dipanshu जी आप देखेंगे कि last 7 quarters में हमने growth दिखाया है. तो उस हिसाब से अगर आप Q1 को आप अगर छोड़ दीजिएगा तो Q2 में we are back on revenue growth. Our margins are very disappointing, and that is only because we are now winning deals, which is vendor consolidation deals. और vendor consolidation deals में ये होता है दीपांशु जी कि पहले आपको on site deliver करना होता है work, and then you can move the work back offshore. So the margins have contracted because of that, but I'm reasonably confident that going into the next maybe 3 or 4 quarters down the line, you will see the margin improvement. Q3 seasonally weak quarter होता है, तो Q3 में हमारा रेवेन्यू कितना बढ़ेगा वो हम अभी कह नहीं सकते. We'll have to wait and watch. और Q3 में हम वेज हाइक भी करने वाले हैं हमारे एम्प्लॉइज के लिए, so that will have a little bit of an impact on margins again. So Q3 will be a little soft, but I'm reasonably confident that Q4 onwards हमारा मार्जिन रिकवर होगा. तो Q3 में भी थोड़ा मार्जिन प्रेशर रह सकता है, बट उसके बाद रिकवरी होनी चाहिए। कोई एक नॉर्मलाइज्ड रेंज होती है मार्जिन्स की जो कंपनी टारगेट करती है, जिसकी तरह या प्रेफरेंस रहती है आपकी कंपनी की उसमें? So दीपांशु जी अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर हमारे जो EBITDA margins थे for the year was about 15.5%. So ideally we want to get back to that level, but to get back to that level I think will take us about 4 or 5 quarters. So Q4 onwards से हम improve करना start कर देंगे, and then every quarter we will improve margins, and hopefully it will take us about 4 or 5 quarters to get back to the 15.5%, which is what we want to ideally get to. Dipanshu. अंडरस्टूड सर। सर, डील विन मोमेंटम इस समय कैसा दिख रहा है? इस क्वार्टर में भी डिसेंट डील विन्स थी, आगे जाकर और किन वर्टिकल्स में बेटर डील मेकिंग आपको दिख रही है वो भी बताएं सर। तो हमारी जो business, if you look at this quarter, the quarter that just went by, our manufacturing did quite well. Our financial services is continuing to do well. हमको थोड़ी LSS में, life sciences में थोड़ी softness दिख रही है, but I'm very confident that even life sciences will bounce back. In the first half year, Dipanshu ji, हमने $300 million का order book किया है, which quite frankly again is a little disappointing. I think we could have done a little better. But the good news though is out of the 300 million, almost half of the deal wins are net new. हमारे जितने भी renewals होते हैं वो Q3 और Q4 में होते हैं. So definitely Q3 and Q4, I think the deal momentum will be much stronger than Q1 and Q2. और किन वर्टिकल्स में? मैन्युफैक्चरिंग में, BFSI में यहीं से आते रहेंगे सर? जी, मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग एंड BFSI will be strong. Healthcare को मेरे हिसाब से और 2-3 क्वार्टर लगेगा, but healthcare will also bounce back in about 2 or 3 quarters. ये एक अपडेट सर हमने देखा था, Amazon वेब सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल कंसल्टिंग कॉम्पिटेंसी स्टेटस कंपनी को मिला है। इसका कुछ मटेरियल बेनिफिट होगा आगे जाकर और किस वर्टिकल में आएगा सर? So, we obviously work very strongly with our partners. Partners form a big part of our revenue uptake. तो हम हमारे capabilities में काफी invest कर रहे हैं. तो that is a manifestation of the fact that the market and the partners are really standing up and noticing our capabilities. तो यहाँ पे हमको जरूर आगे जाके फायदा होगा. Now, whether it will happen in Q3 or Q4 और अगले year में होगा वो मैं अभी कह नहीं सकता.
but definitely in manufacturing, in healthcare, as well as in energy utilities, we will see a lot of benefit because of this. सर हायरिंग में पिकअप दिख रहा है कुछ और कंपनी से हमें इंडिकेशन तो मिले कि फाइनली थोड़े हायरिंग पिकअप हो रही है, आपका क्या एक्सपीरियंस है इस समय? दीपांशु जी, अगर आप देखेंगे हमारे लास्ट 6 क्वार्टर में हमने हायरिंग की है। हमारी जो बिलेबल हेडकाउंट है वो बढ़ा हुआ है। इस क्वार्टर में हमारा बिलेबल हेडकाउंट थोड़ा कम था। इट इज ओनली बिकॉज वी आर aggressively cutting our tail, whereas in our large accounts we are continuing to grow. I think our hiring momentum will continue. It will continue in the next quarter as well, and I'm very confident that we will continue to add a very strong and stable workforce. अंडरस्टूड सर, बहुत बहुत शुक्रिया गुहा साहब आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल्स में एक कैंडिड कॉन्वर्जेशन करने के लिए अपने नंबर्स के बारे में। शुक्रिया सर।